we will have a short introduction that why we are here, why this event is here. Actually, this is an annual event which is celebrated all across the world on 22nd of April. It was started, or the first event was started in 1970. Because in 1970, some people were there who were thinking that the earth or the environment is in danger. So they just took the initiative to raise the awareness among the people. Right now, the organization which was started in 1970, now 90 billion people and 193 countries are connected with this organization. The motive of this organization is to take or raise awareness that how we can protect the environment, which things we can preserve or save for the coming generations. This year, actually every year, this organization has giving us a different slogan. This time they have given us the slogan, invest in our planet. In 2022, they have given the slogan, invest in our planet. Now you people will ask me that what do you mean by invest in our planet? It means that for the coming generation, which things we are investing, which things we are using wisely. So we will do work on that, and this awareness is not for a particular people or the community. We have to raise the awareness even among the different industries that how we can save the environment. For this purpose, we have to do the discussion or take the awareness among different topics. So you people are here. For this event, there is only 25 minutes for every student. Within the time period, you have to make this slogan, and you people will come one by one on the stage and speak something. Whether you have used your regional language, English, Hindi, Punjabi, or any other, you people will come here and tell us. Maybe there are many topics which are not recognized by us. So I hope you people are prepared and you will have you will make it a successful event. Okay. So sir, shall we start it? Okay, so guest of the honor is Mr. Majid Mizar, who is head of professional enhancement cell. He is youth icon among J&K students. I know that Kashmiri students knows her well. So I welcome sir, and we will start this event. Okay, so one clap for all of us who are here for this celebration. Okay, guys, we can start now. It's 12. Now you have half an hour to complete your service. Who's gonna come? This was Hurry up, do your best, and please time का ध्यान रखना, time period. Yes, come. Yes, only 25 minutes are there. In between you have to complete it. Banana pencil, okay. Anyone has to make a pencil? Okay, hurry up, yes, you can do very well. ब्लैक खाना है यार.
ले इलियास इलियास इलियास
ठीक है। और उल्टा पकड़ रहा है। Actually, no. Last minute. Okay. At 12:45 we will stop writing and okay. लिख रहा है कुछ? मुझे बिल्कुल पता। Oh man. Говорю, надо, да, мышки. Им трясак मेहनत कर यार से तो यार मैं तो भाई बताइए इस वीडियो हाँ सही बात ओके
Only 10 minutes are left. Hurry up. करी फोन बंद है चाख्यान
your slogan and will explain minimum half minute. Okay, so be ready for it. Only 4 minutes are left, and be ready with your speech also. So at 43. Finishing touch. Leave it. Okay? Amandeep Kaur and I am from BCA second semester. So today we are gathered here for slogan writing competition on Earth Day. So, so my slogan is don't be greedy, it's time to be greeny. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਂਟਸ ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹਰਿਆਲੀ ਐਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਏਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਨ 'ਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰੈਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਥੀਨ ਹੈ ਕੋਈ ਲੇਜ਼ ਗੁਰਕਰੇ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਤੇ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾਤੇ ਲਿਖਤਾ ਅਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। From BMLT second semester. My slogan reads as follows: to cherish what remains of Earth and to foster its renewal is the only legitimate hope of survival. Fact at hand is that Earth is the only planet that sustains life. And this slogan is meant to create awareness on protecting nature so as to enhance the Earth to sustain life. We are agreeing that damage has been caused.
But we are saying that part of earth where damage has not been caused, let's cherish that part, let's conserve that part. And the part that damage has been caused, let's foster that part to rejuvenate the earth so as we can have our sustainability. Earth is just like an inheritance. And in order for us to have it, we should preserve it. It's an inheritance that we have to give to our future generations. So we have to preserve the earth so as for it to be there. What I'm saying is that it's not the earth that is in trouble, but rather it is us that are in trouble. We destroy the earth, we destroy life. Thank you. Good afternoon everyone. My name is Mannat. I am from BFA department. आज मैंने अपने स्लोगन में लिखा है, मत करो धरती पर तुम सब अत्याचार, क्योंकि यही तो है हमारे सांसों का आधार। जो हमारी धरती है, हम उस पर कितना प्रदूषण, धरती पे कितना प्रदूषण फैला रहे हैं। एक तरह से हम अपनी धरती पर अत्याचार ही कर रहे हैं। तो जिस चीज़ ने हमें ज़िंदगी दी है, जिस धरती पर हम जी रहे हैं, उसी पर अत्याचार करते रहेंगे तो फिर हम जिएंगे कैसे? जो पेड़ पौधे जो सब हमें सांसें दे रहे हैं, उन्हीं को काट देंगे, वही ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर जिएंगे कैसे हम? ये अर्थ डे, स्लोगन कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, इन सब में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन सब को अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए हमें। जैसे हम यूथ हैं, हम देश का फ्यूचर है, तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेनी चाहिए कि हमें अपने अर्थ को कैसे बचाना है, प्रदूषण कैसे ख़त्म करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गो ग्रीन, जैसे हम कहते हैं ना, गो ग्रीन, पेड़ पौधे लगाओ, प्रदूषण को कम करने की कोशिश करो। जहाँ पे तुम थोड़ी सी जगह पे एक्टिवा लेके जाना चाहते हो, उतनी सी जगह पे साइकिल ले जाओ या पैदल चले जाओ। क्यों इतना प्रदूषण करना? मतलब छोटे छोटे चीज़ों से कंट्रीब्यूट अगर कर सकते हो तो करो। जितना हम अपनी अर्थ को बचा सकते हैं उतना हमें बचाना चाहिए। थैंक यू। Good afternoon everyone, I'm Mehek and today I wrote, it's cool to care before the trees bare. Thank you. Okay, just show your slogan over there. Okay. Clap for Mehek. A very good afternoon everyone. So the slogan is as follows: turn your awareness into action. So we all are aware from our primary schools that what we have to do to save our earth. This is pollution, this we should not throw that, but still we are in the mode of ignorance. We are like, when we hesitate to pick, if something is falling on the floor, we just hesitate to pick a chocolate wrapper also. We are all aware but still in the mode of ignorance. So this is the slogan, turn your awareness into action. Thank you. Very good afternoon everyone. My slogan is save the earth, at the end earth save you. इसका मतलब ये है, अगर हम अपना पास्ट और प्रेजेंट बचाएंगे तो हमारा फ्यूचर सेव रहेगा। जैसे कि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में लेके चलते हैं, हम अपने फ्यूचर बचाने के लिए हम अपना सेविंग्स करते हैं स्टार्टिंग में ही, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। वैसे ही अर्थ है, और हम अपना पोल्यूशन कंट्रोल नहीं रखेंगे और इस पर फोकस नहीं करेंगे कि हाँ कैसे हम इसको सेव करें, सो हम अपना फ्यूचर सेव नहीं कर सकते। तो ये एट दी एंड हमें अर्थ को सेव करेंगे तो हम अर्थ हमें सेव करेगा। थैंक यू। And I'm from BTech second semester. My slogan is, I am saving earth by writing save earth on a paper made by cutting trees. So my motive is to say that we should save papers and go paperless. Okay, wonderful thought, wonderful thought. Okay. A very good afternoon to everyone present here. I am Neha from the BSc Agriculture second sem, and my slogan is, when the last tree has been cut, the last river has been poisoned, the last fish has been caught, only then we will realize that we can't eat money. Similarly stated by Mahatma Gandhi ji that nature has everything to fulfill our needs but not for our greeds.
We are the only humans that are cutting the trees and writing and making paper from it and writing that save trees. What a irony it is. At last, I want to say that it's not mine, it's not yours, it's ours, our Mother Earth. So please save it. Thank you and have a nice day. Good afternoon to you all. My name is Rohit Kumar. I am from BTech second sem. My slogan is मिट्टी बचाओ, धरती को हरा भरा बनाओ और रहने लायक बनाओ. So आज के टाइम में हर एक साइंटिस्ट जो मिट्टी की खोज कर रहा है या फिर उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, उनका कहना ये है कि धरती खत्म हो रही है. उनका कहना ऐसा क्यों है? क्योंकि धरती की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ खत्म हो रही है, जो कि है मिट्टी. तो आप सब सोच रहे होंगे कि क्या बकवास है, मिट्टी कैसे मर सकती है, राइट? तो मिट्टी कहा जाए तो मिट्टी में प्लैनेट से ज़्यादा जीवाणु है. लाइक एक मुट्ठी मिट्टी में नियर बाय 700 मिलियन टू 1000 मिलियन सूक्ष्म जीवाणु होते हैं. तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा उसमें एक मिट्टी में कहा जाए तो जीवाणु होते हैं. तो आज के टाइम में केमिकल्स के यूज़ से वो जीवाणु मर रहे हैं. एवरीडे 27,000 से ऊपर जीवाणु मर जाते हैं. तो उसके लिए एक व्यक्ति हैं श्री सदगुरु जी, जिन्होंने एक मुहिम शुरू की है जिसमें वो 30,000 किलोमीटर फ्रॉम लंदन टू कावेरी बेसिन, कावेरी के तट तक जाएंगे. उसके रास्ते में जितने कंट्रीज आएंगी उन सब के प्रमुख जो होंगे लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, उनसे मिलकर उनको मिट्टी का महत्व बताएंगे. क्योंकि अगर मिट्टी ना आ रही तो आने वाले UNO की रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले 50 से 60 साल में हमारे पास खाने लायक कुछ नहीं बचेगा. उनके हिसाब से सिर्फ अर्थ पे इस टाइम 70 to 80 हार्वेस्ट बची हैं. 70 to 80 हार्वेस्ट का मतलब सिर्फ 70 to 80 बार हम क्रॉप्स उगा सकते हैं और उसे कट कर सकते हैं. उससे ज़्यादा धरती की कैपेसिटी नहीं बची. तो उसके लिए हमें सदगुरु का जो मोटिव है उसके साथ देना चाहिए. उनका हम धरती को बचाने के लिए उनकी एक बात मान सकते हैं. उनका कहना है कि हम अगर आज के टाइम में सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उनका कहना है कि #सेव सॉइल करके हम कोई भी एक इम्पोर्टेंस सॉइल की पोस्ट करें जिससे वो दूसरे लोगों तक पहुँचे और वो सॉइल को सेव करने में योगदान दें. थैंक यू. Good afternoon everyone. My name is Dasmeet Kaur. I am from BCom second. My slogan is the environment is no one's property to destroy. It's our responsibility to protect. Our environment, planet Earth, is the one which gives us everything. We should protect it by using non-polluting products, eco-friendly products, and we should plant more and more trees so we can get good oxygen and everything. So at last I would say we should join our hands together to save our planet Earth. Thank you. Good afternoon all. My name is Harvinder Singh. I am from BHFCT department. And today's my slogan is I am the Mother Earth and I approve this day. Let's save the world together. Every day we produce tons of degradable and non-degradable wastes, and even we are disposing dirty sewages, drainage, and even chemicals recklessly. If we aren't concentrating on saving our earth, then in near future the water is as expensive as petrol. So if we have to save the world together, then we can save the earth. Thank you. My name is Komalpreet Kaur. I am from BSc Honours Mathematics, 4th semester, and my slogan is Pavan Guru, Pani Pita, Mata Tat Mahat. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਮਹਾਨ ਮਾਤਾ ਹੈ. ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ. ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੰਛੀ, ਹਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਜੋ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਗਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ. ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਵਾ ਹੈ, ਸੋ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ.
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ we love and care the great mother earth. Thank you. My name is Karthik and I am from BHM City 6th SEM, and my slogan is on Save the Water. There is no life without the water. The earth has its own soul. Pollution is society harmful for earth and you. As we know that without water no life is possible on earth. Thank you. Good afternoon to one and all present here. This is Priya. Today I wrote, every action has a reaction. All we have one planet or one chance. So इसका मतलब सिंपली ये है कि आज हम कुछ भी करते हैं तो कल को वो हमें भुगतना पड़ेगा ही। अगर आज हम पानी को पोल्यूटेड करते हैं तो कल को हमें वही पानी पीना है। तो जो भी हमारे पास है वो आज ही है। इसका सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। अगर हम आज को सेव करते हैं तो कल हम उसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਅਰਥ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਦੇਖੀਏ, ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਅਨਫਰਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਬੈਗਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। My name is Abhideep Singh. I am from BHM City. Today I make a Save Earth slogan. The earth has soul. Save Earth, save Earth. Hello everyone. Today I Shubhpreet from BCom 2nd SEM and my slogan name is Small Hands Can Change the World. So, as Earth Day is celebrated on 22nd of April every year to aware the people about protecting the environment. As my slogan name is, small hands can change the world. It means small efforts of every human being can create a great change for our environment. For example, we can plant trees and reduce the usage of modes that creates pollution in air, etc. Thank you. Student, thank you so much for your wonderful ideas, your wonderful way of delivering the speech, and once clap for yourself because we people are here celebrating the World Earth Day. Thank you so much. Thank you so much.